Namaskar. Welcome to our another video designed specifically for legal professionals, law students, and anyone need to deepen their understanding of legal frameworks. Today, we are going to do a quick revision in a simple language through a shared PDF notes in company law. You may download complete notes from the description link or from the first comment of this video. Let's start. The topics which all are covered in the entire notes are as follows. Company law. What is company? Disadvantages of forming a company. Doctrine of lifting the corporate field. Company versus partnership. Company versus Hindu undivided family. Types of companies. Transition between company types. Formation of a company. Promoters. Incorporation of a company. Flotation or मेरे बच्चे उस बिजनेस को टेक ओवर करेंगे और उसे चलाएंगे, उसके बाद फिर उनके बच्चे उस बिजनेस को टेक ओवर करेंगे और उसके बाद चलाएंगे. दैट इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन. एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ परपेचुअल
जो भी डिसाइड करते हैं वही उस रिजोल्यूशन में पास होता है और वो कंपनी के लिए यूज होता है। वॉलंटरीली एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट इट मीन्स की कंपनी में कुछ पोर्शन को सेव रखा जाता है गुड कॉज में यूज करने के लिए। लाइक बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो सीएसआर एक्टिविटीज करती हैं जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम से कही जाती है, और इसके तहत कंपनी को एक सर्टेन अमाउंट गुड कॉज के लिए खर्च करना होता है। दैट इज कंपल्सन एंड दैट इज गवर्नमेंट मैंडेट। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, इसका मतलब है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली बंद भी हो सकती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, तो इसमें फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर देना होता है, ये ओनरशिप इसमें डायरेक्टली नहीं रहती है, ये डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता है। कंपनी चूंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू रूल करती है। इसमें टैक्स बर्डन हो जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसा कि हमने बात की सीएसआर एक्टिविटीज ये सब करना कंपलसरी होता है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद। और इसमें अगर कंपनी को बंद करना हो तो इसमें डिटेल बाइंडिंग प्रोसीजर होता है। जितना कंपनी स्टार्ट करने में डॉक्यूमेंटेशन और पैसे लगते हैं उतने ही उस कंपनी को बंद करने में भी लगते हैं, उससे ज्यादा ही बल्कि लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का मतलब है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और डायरेक्टर उसमें जो कंपनी को चला रहे हैं, तो डायरेक्टली कभी भी डायरेक्टर के ऊपर एक्शन नहीं होता है और नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो कंपनी के अंडर में काम कर रहा है और कंपनी सबसे पहले आगे होती है। बट इन दोनों के बीच में जो ये पर्दा होता है, इस पर्दे को जब हम हटा देते हैं कुछ एक सर्टेन सिनेरियो में और डायरेक्टर के ऊपर भी एक्शन लेते हैं, जब इलीगल एक्टिविटीज होती है, कोई फ्रॉड होता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ काम होता है, तब डायरेक्टली कंपनी को हम जेल नहीं भेज सकते हैं लेकिन उसके डायरेक्टर को जेल भेज सकते हैं। तो डायरेक्टर को जेल भेजने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल अप्लाई करना होता है, जिसमें कि डायरेक्टर को लायबल बनाया जाता है उस इलीगल एक्ट के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल। It means imposing penalty or make accuse directly to the director of the company in case of any fraudulent or misuse of company is known as lifting the corporate veil. इसमें क्या क्या इंस्टेंसेस होते हैं जब ये ऐसा किया जा सकता है? तो जब कोई फ्रॉड किया गया है डायरेक्टर कंपनी के द्वारा या कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट किया गया है, जहां कंपनी एज एन एजेंसी के काम कर रही है, कोई जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो पब्लिक के लिए हुआ है, जैसे वेयर द डॉक्ट्रिन कॉन्फ्लिक्ट्स विद पब्लिक, कोई कंपनी एनिमी कैरेक्टर मींस सपोर्टिंग, मतलब एनिमी कंट्री को, लाइक वो किसी वैसे कंट्री को सपोर्ट कर रही है जो कि एनिमी है, या फिर कोई टैक्स चोरी करने की कोशिश कर रही है, या फिर अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, या फिर where it is found that company has abused its corporate personality for a unjust and inequitable purpose. Inequitable purpose means उन्होंने असंवैधानिक कुछ काम वैसा किया है जो कि कंपनी को नहीं करना चाहिए, तो उस केसेस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्स डॉक्ट्रिन काम आता है। कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन। कंपनी में वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, पार्टनरशिप में दो पर्सन या फिर उससे ज़्यादा लोगों के बीच में पार्टनरशिप होती है। इसमें क्रेडिटर्स होते हैं, एजेंट्स, कंपनी मेंबर्स आर नॉट एजेंट्स बट पार्टनरशिप फॉर्म्स इट्स वाइस वर्सा। इसमें रेगुलर पर्सन होते हैं जो कि इसमें एजेंट का काम करते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स हो सकते हैं, बाइंडिंग आउटसाइडर्स, इट मीन्स एग्रीमेंट्स बाइंड्स आउटसाइडर्स टू बट इन पार्टनरशिप फॉर्म इट्स वाइस वर्सा। लायबिलिटी डिसाइड हो जाती है, कंपनी में लायबिलिटी कंपनी की होती है, पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है। ऑडिट
Next topic है transition from private to public company. A private company can become a public company by amending its article through a special resolution. Accordingly, all restrictions on its as a private
the registrar. MOA, that is Memorandum of Article, that includes objectives of the company, name, address, capital, nature of liability, etc. AOA, Article of Association, that includes rules and regulation related to the internal management of the company. Declaration, that is provided by advocate, CA, cost accountant, or company
of memorandum. For example, change of name. Then by special resolution need to pass with the approval of the central government in writing. By ordinary resolution, if the central government finds the sue the company. If the act is ultra vires against the directors and intra vires against the company, then it can be ratified by all members. If the act is ultra vires against the articles, it
These restrictions, it cannot have the status of a private company. Contents of Article of Association are as follows: adoption of preliminary contracts, number and values of shares, allotment of shares, call of on shares, lien on shares, transfer and transmission of shares, forfeiture of shares, alteration of capitals, conversion of shares, voting rights and priorities, meetings, directions and their appointments, borrowing powers, dividends and reserves, accounts and audits. And last, winding up things, how the company will be wind up. Alteration of articles. The board of directors will approve the proposal in a general meeting. The secretary shall convene or hold the meeting to pass the special resolution. A copy of the special resolution shall be filed with the ROC within 30 days. 6 copies of the amendments should be sent to the stock exchange. Should not be against the provision of the act. Should not be illegal. Approval of the tribunal is required for conversion from private to public or vice versa. No increase in the liability of members. Should not cause a breach of contract. Must be for the benefit of the company. Should not be a fraud or on the manner
existing members or shareholders, but shares are placed privately to fewer than 50 persons, or share are uniform with previously issued shares and debentures. A private company is criminal liability. Every authorized person involved is liable for punishment. A statement in lieu prospectus. If a public company wants to raise capital privately, it needs to file a statement in lieu of a prospectus with the ROC for registration at least 3 days before the first allotment of shares or debentures. Company type like public company, the prospectus if the company wants to raise capital publicly, or if the and for the state thing, if the company wants to not raise the capital publicly. Private, it's not applicable in the prospectus, and that also not applicable. Share capital means the capital raised by a company through the issuance of shares can be raised either at the time of company formation or expansion. Once raised share capital becomes a permanent liability of the company. Permanent liability can be removed in the case of redeemable preference shares. The company can take back those shares after a specified period. Other shares can only be returned or repaid at the time of winding up. Share details and breakdown should be mentioned in the MOA. Kinds of share capital: nominal, registered or authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, paid up capital, uncalled capital, reserved capital. Reserved capital are further divided into reserved fund and reserved capital, fixed and circulating capital, working capital, debenture capital and entire capital. Then computers the total capital of the company is divided into units of a small denomination. Each such unit is called a share. Nature: it is a bundle of rights and liabilities, interest measured by a sum of money. It is not negotiable instrument, movable property, transferable in nature. Kinds, types of share: equity shares, preference shares. Preference shares are cumulative or non-cumulative, participating or non-participating, redeemable or non-convertible. Preference shares. Preference shares fulfill the following two conditions: right to receive a dividend at a fixed rate before any dividend is paid on the equity shares,
At the time of winding up, they have the right to the return of capital before that of equity shareholders. Types of preference shares: cumulative preference shares. Holders are entitled to receive arrears of the dividend before any dividend is paid on equity. Non-cumulative shares, if not mentioned in the MOA, holders will not receive any dividend or arrears if the company does not declare a dividend in that year. Participating preference shares, non-participating shares, redeemable preference shares, irredeemable preference shares, convertible preference shares, and non-convertible convertible shares. I already defined in a very simple language for your convenience. That's the reason why I'm not just reading those lines. So you may refer those same thing. There is nothing to explain in that one. Definitely, I will explain wherever required. Equity shares. Equity shares are paid dividends only when profit remains after preference shareholders have been paid their fixed rates of dividend. There will be no fixed rates of dividend on equity shares. Company meetings. So these are the types of company meetings used to be done, like shareholders meetings, statutory annual general meeting, extraordinary general meetings, directors meeting, board meetings, committee meetings, a special meeting, class meeting, creditors meeting. Meeting. Meeting means the gathering, assembling, or coming together of two or more persons for the transaction of any lawful business. A company cannot act on its own, therefore it expresses its will through resolutions conducted in meeting. Statutory meeting. Upon receipt of the letter of commencement must be conducted between 1 to 6 months. This meeting is held once in the lifetime of the company. Not conducting this may cause suspension. Annual general meeting, then extraordinary general meeting, board meeting, committee meeting, class meeting, creditors meeting, debentures. Content of debentures are the important topic. Debentures are a debit instrument used by the company to raise funds from the public. The company issues a debenture certificate to the debenture holder. The debenture holder is the creditor of the company. Contents of debenture: promise by the company to repay the principal amount on a fixed rate of interest, charge on the company assets, a provision that debentures are issued with conditions. Characteristics of debentures. Debentures are generally issued in series, form of certificate, acknowledgement of indebtedness. Debenture holders carry no voting rights. Debentures holders are creditors of the company, not its members. Can sell the debentures, may be secured or unsecured. Types of debentures are registered debentures, bearer
cost of productions, eliminate competition, increase market share, increase cash resources, build goodwill, increase efficiency. So now that's it for the day. If you found this video helpful, hit that like button, subscribe for more legal insights, and drop a comment with your thoughts or questions. Thanks for watching and see you in next video. If you are having any question, just mark it in the comment and I would love to answer that. Thanks a lot.